Assalamualaikum everyone, this is Ansab back again with another episode of the Crossbar Perspective Podcast and आज हमें join किया है Sara Khan ने who's a professional player in the Pakistan women national team and she's also playing in a club in Karachi. आज हम इनसे बात करेंगे and we'll talk about her experience in the women football team and how she started playing and all of those things surrounding football in her life. Assalamualaikum Sara, how are you? Walaikum salam, I'm good. How are you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. So let's just straight jump into it. And why don't we start with how you started playing football and how what things basically shaped the career, shaped your future football career? I think I started with some players, young players. I used to play in a society. और उस सोसाइटी में आई यूज टू प्ले तो वहाँ पे लड़कों के साथ मैं खेलती थी और वहाँ में पहले मैं क्रिकेट खेलती थी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं फुटबॉल पर आई तो समथिंग दैट शेप माय करियर आई वुड से ह्यूज थैंक्स टू पीएफएफ एंड आर्मी बिकॉज स्टार्टिंग में आई गेव अंडर 19 के ट्रायल्स एंड देन आफ्टर अंडर 19 आई जॉइंड आर्मी का डिपार्टमेंट जहाँ पे जो मेरा फुटबॉल का बेसिक्स है वो मैंने सीखा था तो या ह्यूज क्रेडिट टू देम एंड देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अटेंड ऑल द कैंप्स एंड उससे मेरा स्टार्ट हुआ So आप किस position पे खेलती थी when you were back with the army? You played with the army department, right? Yeah, to that time I would say I was a winger. I used to Okay. dribble in a lot. तो वो बहुत different topic था. फिर starting में मैंने dribbling और रोनाल्डो को देख के start किया था. So I used to dribble a lot. तो वहाँ पे as a winger I used to play. I won't say I used to play because I didn't, because I was like most of the time I was bench because मैं स्ट्रीट फुटबॉल से आई थी और मुझे ग्रास पे कैसे खेलना है आई हैव नो क्लू वहां पे आई थिंक अ ईयर आई सैट ऑन द बेंच उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने कराची से रिजॉइन किया एंड वहां पे कोच अदील काइंड ऑफ गाइडेड मी कि आई शुड गो फॉर फुल बैक सैफ जो हमारा फर्स्ट सैफ था उसमें ही टोल्ड मी दैट आई शुड गो फॉर ट्रायल्स में आई शुड प्ले फुल बैक वाली पोजीशन बिकॉज फिजिकली आई वाज गुड एंड आई वाज गुड ऑन द बॉल तो ही टोल्ड मी कि फुल बैक के लिए ट्राई करूँ तो वहां से आई थिंक 2021 दिसंबर वहां से मैंने एज अ फुल बैक आई ट्राइड तो उसके बाद से आई बीन प्लेइंग दिस पोजीशन एंड या आई थिंक आई लव दिस पोजीशन बिकॉज यू गेट द बॉल अ लॉट बिकॉज फुल बैक के पास ज्यादा बॉल होती है तो या So आपने futsal भी खेला हुआ है, I believe, and आपने 11 side भी खेला हुआ है. How would you compare both of these formats, and what do you think is the better format among these two, or which one do you like? I prefer of course 11 aside football futsal से ज़्यादा because futsal में I prefer कि अगर आपको फन के लिए खेलना है तो आप खेलो उसके अलावा बहुत कंपटीशन भी है क्योंकि futsal में आपको जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इट्स वेरी फास्ट तो जैसे आपको बॉल में यू नीड टू थिंक फास्ट तो इसका फायदा ये है कि इफ यू प्ले futsal ज़्यादा तो आपको 11 असाइड में डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ईजी होता है तो आई थिंक futsal का एक बहुत बड़ा रोल है फुटबॉल में ऑफ कोर्स बिकॉज यू कैन ड्रिबल you can think fast तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती है 11 aside में but I prefer futsal for fun but 11 aside now And if right now आप Karachi United में Karachi City में खेल रही हैं, right? yeah So how's that experience going compared to the army department? And army department basically था कैसे? Because we have seen कि अभी I think एक department league भी हुई थी men's की and उसमें भी काफी we saw a lot of players come out of that as well. And I think department league has somehow also shaped the future of football. हमारे काफी सारे national players जो हैं वो department league से निकले हैं. So what's the difference between department जो आपने खेला and right now जो आप Karachi City में खेल रही हैं? I think department में I would say they see the potential because to be honest मेरा फुटबॉल में डिसीजन मेकिंग और ये सारी चीजें मेरी दूर दूर तक नहीं है एंड आई वोंट से अभी भी बहुत अच्छी हैं अभी भी ना उनके बराबर है तो दैट टाइम आई थिंक ट्रायल्स हुए थे तो दे सॉ मी ड्रिबलिंग तो जस्ट बिकॉज़ आई वाज ड्रिबलिंग गुड तो दे थॉट हर प्लेइंग स्टाइल इज गुड तो उसको सेलेक्ट करना चाहिए तो उसके बाद जब आर्मी में आई थिंक देयर वाज दिस कैंप फॉर चैंपियनशिप एंड आई डोंट रिमेंबर द ईयर बट उस चैंपियनशिप में दे हैड लाइक 2-3 मंथ कैंप का उस 3 महीने के कैंप में आई वेंट लाइक मैं बहुत जल्दी चली गई थी एंड आई स्टेड एट द हॉस्टल बिकॉज आई वाज एक्साइटेड कि आई लर्न फुटबॉल एंड ब्ला ब्ला सो वहां मैं जल्दी गई तो वहां पे यू हैव द ग्रास यू हैव द ग्राउंड यू कैन प्ले जब भी आपको जाना है आप ट्रेनिंग कर सकते हो वहां पे तो वहां पे मैंने उनकी जो भी फैसिलिटीज थी आई वुड से वेदर इट्स शूटिंग और एनीथिंग पासिंग एनीथिंग बिकॉज आई वुड से जो फाउंडेशन है मैंने वहीं से सीखा है आई वोंट से कि वहां पे किसी कोच ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी आई वोंट से कोच ने बट वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज अलोन तो 4-5 लड़कियां थी तो आई यूज्ड टू टेक फुटबॉल में ग्राउंड में जाके शूटिंग कर ली मैंने शाम को 7-8 बजे तो आई रिमेंबर दैट टाइम जब आई कांट लिफ्ट द बॉल आई वाज लाइक ये बॉल उठ क्यों नहीं रही बिकॉज एज अ फुल बैक नाउ आई कैन पुट दोस क्रॉसेस एंड एवरीथिंग बट
that time it was so hard. I was like, ये ball उठती क्यों नहीं है? Blah blah. I used to take shots, you know, marker पे ball रख के. So I've done that a lot. So I would say जो proper foundation जो मैंने खुद create की थी वो थी आर्मी में, and तो बहुत अच्छा था वो. तो उसके लिए मैं आर्मी को क्रेडिट दूंगी. आई वोंट से इनके पास अच्छे कोचेज हैं या इनके पास एक अच्छा सेटअप है, बट पहला तो दे पे यू, डजंट मैटर हाउ मच दे पे यू, बट दे पे यू एवरी मंथ. अपार्ट फ्रॉम दैट यू, उनका फाउंडेशन का जो भी सेटअप है वो थोड़ा सा अलग है, बट आई थिंक प्लेयर्स को जल्दी लेना, उनको एक एरिया देना जहाँ पे दे कैन स्टे विदाउट एनी यू नो, कोई भी उनको एक्सपेंस नहीं देना है. तो आई थिंक उसमें आर्मी हैज डन अ वेरी ग्रेट जॉब एंड आई वुड गिव देम द क्रेडिट. And Karachi City ka, I would say I joined 2021. The actual football as in 11 aside mein, you can't dribble every single time. You can, I mean, you barely get the ball. You don't get the ball har Yeah, bar. बिल्कुल This ऐसे ही. match I got like 30 minutes bhi nahi, I think 25 something. Usme I got the ball 3 times. That's it. So आप बॉल पे ड्रिबल नहीं कर सकते, लाइक बहुत कम. इफ यू आर ऐसे ही है. कॉन्फिडेंट तो आप कर लोगे, बट एक्चुअल फुटबॉल जो है आई वुड से आई हैव लर्नड इट फ्रॉम कोच दी, क्योंकि आई प्रेफर कि मैं बॉल लेके ड्रिबल करूँ, मैं किसी को बॉल ना दूँ. एंड देन ही टोल्ड मी, यू नो, यू हैव टू पास द बॉल. उनके अंडर यू नो आई हैव लर्नड वेदर इट्स पासिंग, गेम कैसे खेलनी है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गेम पूरा फुटबॉल. बिकॉज कहने को इट्स सिंपल, इफ यू आर स्मार्ट ब्रेन वाइज, आपका आईक्यू अच्छा है तो यू कैन प्ले दिस गेम बहुत इजीली, बट यू हैव टू हैव द ब्रेन टू प्ले दिस गेम. कहने पे इट्स वेरी इजी कि आप खेल सकते हो, बट एज अ प्लेयर या तो आप स्टार्टिंग से स्मार्ट हो जाओ, नेचुरली टैलेंटेड हो जाओ, बिकॉज आप ड्रिबलिंग तो आप सीख लेते हो, बट फुटबॉल अंडरस्टैंडिंग, आईक्यू, मैचेस देखना, द एनालिसिस एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ही टोल्ड मी, एंड देन कैंप्स वगैरह, इट हेल्प मी अलॉट. तो आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू कराची सिटी, जिसने मुझे फुटबॉल एक्चुअल में सिखाया. So इससे I'm my next question was कि आपके favorite coach कौन है, but I think it's quite obvious. And how would you compare the competition in Karachi City इस वक्त, where we have a lot of national stars जो शायद आपसे पहले से national team में थी, then we have some diaspora as well in Karachi City. How would you compare that competition to the one you had in army department, or like the quality of football you had there? How would you compare that? As compared to diaspora, of course, the facilities, the opportunities they get बाहर खेल के एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. बट आई फील है कराची सिटी में जो हम प्लेयर्स हैं, इट्स नॉट लाइक इफ मैं किसी सेशन में जा रही हूँ, कराची सिटी का कोई फुटबॉल सेशन है, तो आई नो आई हैव टू प्ले माई बेस्ट गेम, वो चाहे एक सिंगल पास भी क्यों ना हो. तो इफ प्लस कॉम्पिटिशन बहुत है, कॉम्पिटिशन एज इन इफ आई सी सोहा, अलीजा, आलिया, मिशेल, तो हमारे में ऐसा है कि इफ आई प्ले द यू नो आई प्ले अ रॉन्ग पास, मैं उसके लेफ्ट फुट पे खेल रही हूँ, मुझे राइट फुट पे खेलना चाहिए, तो आई गेट टू हियर के यू नो सारा प्ले टू माय राइट फुट. तो ऐसा नहीं दैट हम ऐसी मिस्टेक्स को ऐसे दरगुजर कर दें. अब चूंकि अब मेरे पास ऐसा कंपटीशन है, बिकॉज देयर आर गर्ल्स हु यू नो केयर फॉर दिस गेम, देयर लाइक दे वांट टू प्ले इट राइट, उनको अच्छा खेलना है. तो ये एक तरह से मुझे पुश करता है. इफ आई सी कि एज कम्पेयर टू यू नो मेरा स्टेमिना लेवल मेरी टीम का ज्यादा है, तो इट पुशेस मी कि यू नो सारा यू कांट बी लास्ट, यू हैव कंपटीशन इतना है इसी छोटे से सर्कल में कि आप अपने आप को बहुत पुश करते हो. दैट इज समथिंग आई लाइक कराची सिटी में, कि सारे प्लेयर्स दे आर विलिंग टू प्ले फुटबॉल, एक्चुअली दे वांट टू वर्क हार्ड फॉर इट. तो दैट इज समथिंग आई लाइक. बट एज कंपटीशन या उसकी बात की जाए डिफरेंस की, डायस्पोरा और हम में, तो आई थिंक देयर इज द डिफरेंस. बट चूंकि हमारे 5 उसमें इतना एक कंपटीशन हमने रखा हुआ है, तो आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट, it gets easy Okay, for us. and coming to the point that you guys just played the Women National Championship a few months ago. How was that? You guys won the final, obviously. How would you compare Karachi City to other teams in Pakistan? Because मेरे हिसाब से Karachi City and what Adil Bhai and Shahzeb is doing, it's fabulous work, and I think Karachi City ki women team is one of the best in Pakistan right now. How would you compare your team with the teams in the championship, and then you guys lost to Football Factory? Where do you think the opposition like unka weak hold kya tha? Where could they have been better from you guys? And obviously आपकी team was better. आपके पास like total जो अगर आप अपना lineup देखो, it was way better than what they had. They didn't even have the training and all of that. That's totally मतलब उसकी समझ आ रही है. But besides that, what do you think? Where could have they improved? I think because the advantage we got was first that हमारे सारे players experienced थे. The chemistry between us was so good because we play together a lot. And उसके अलावा I would say कि the only disadvantage they had was experience wise. Experience के अलावा उनकी training साथ में नहीं. And I think I would say I would talk about legacy, because legacy अभी अभी club बना है, तो we can't Yeah. expect them to play उस level पे.
Because अभी नहीं, club I बना think है, it they've been was playing. amazing कि वो लोग फाइनल तक पहुंच गए थे with Yeah. that kind of an That experience. was Yeah. very good. And also TWK, ये इन्होंने एक हमें अच्छा competition दिया हुआ था. So I think the only thing they would lack is the training session. I don't know because the training sessions होते हैं या नहीं होता. I have no clue about it. Because if you see कि दोनों teams में players अलग-अलग जगह से लाए गए थे. ऐसा नहीं है कि 6-7 प्लेयर उसी क्लब के हों जो रेगुलरली खेल रहे हैं. तो ट्रेनिंग सेशंस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस की भी थी कि नहीं. तो आई वोंट से नहीं की थी बिकॉज दे गेव अस अ टफ कंपटीशन. बट आई थिंक द ओनली एडवांटेज वाज बिकॉज हमारा एक फाउंडेशन बना हुआ है, हमारे ट्रेनिंग सेशन साथ में बहुत सारे होते हैं. एंड 6-7 प्लेयर की तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें पता है कि किस प्लेयर को कैसी बॉल चाहिए. इफ आई नो अलीजा को ग्राउंडेड बॉल चाहिए, सोहा को किस तरह की बॉल चाहिए. तो आई थिंक ये एडवांटेज था हमारे पास. तो अगर इनके इम्प्रूव करने की बात की जाए तो आई थिंक इफ 2-3 years if they play together, यही टीम के साथ अगर खेलते हैं उनको और एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आई थिंक दे कैन गिव अस और अच्छा कंपटीशन इन फ्यूचर. Okay, so coming to the thing that आपने जैसे start किया, you told us कि आपके obviously basics आपने अपने सारी basics पे खुद काम किया. What do you think a girl who is maybe 16 or even younger should do to start achieve football? Like obviously you are playing at the top level in Pakistan as well, possible obviously. What do you think कि जो लड़की start कर रही है, how should she go around with these things, and yeah, what should she do about these things? सी आई वुड से कि जितने मैचेस और जितना प्लेइंग टाइम आपको मिल सकता है आप लो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि जितना आप मैचेस में सीखते हो उतना आप ट्रेनिंग सेशंस में नहीं सीखते. बेसिक्स ऑफ कोर्स बेसिक्स सबसे पहले प्रायोरिटी है. आपकी टेक्निक कैसी है, पासिंग, जगलिंग एंड एवरीथिंग, ड्रिबलिंग. उसके बाद आता है कि आप कितने फुटबॉल मैचेस खेलते हो. बिकॉज आई थिंक द ओनली थिंग वी लैक इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें आई थिंक हमसे डायस्पोरा प्लेयर्स जो है जिनको बढ़ोतरी मिलती है क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है बिकॉज दे प्ले मैचेस मोर. हमारे में यही मसला है अगर हमें मैचेस नहीं मिलते बिकॉज मैचेस खेलने से आप जितना सीखते हो उसके अलावा आप कुछ नहीं सीख सकते. बिकॉज इफ आई नो कि ऐसी सिचुएशन में मैंने आना है, मैं फुटबॉल मैच में ही उस सिचुएशन में आ सकती हूँ कि जस्ट इमेजिन इट्स 2 versus 1 एंड आई एम फुल बैक एंड आई नो माई सेंटर बैक कांट क्रॉस दिस लाइन एंड आई नो आई हैव टू मेक अ डिसीजन. तो ये सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप आई थिंक मैच में ही सीखते हो. तो आई वुड से कि कोई भी यंग प्लेयर है टेक्निक सही करे अपनी और जितने फुटबॉल मैचेस खेल सकता है, जितना प्लेइंग टाइम ले सकता है वो ले. Perfect, perfect. Okay, coming to the Pakistan national team, हमने देखा कि for the past few years, Pakistan women national team ने काफी बेहतर performance की है comparatively to men's national team. Where do you think you guys had an edge as a team? And then we'll come to the matches you played in Qatar previously with Saudi. So let's talk about the SAF championship that you played. This stuff. Yeah, no, the previous one. Okay, तो previous one I would say उस time तो of course बहुत सारे players unfit थे including myself because even उसमें मुझे 11 aside में कोई experience कुछ भी नहीं था and पूरी team unfit थी एक तरीके से because अचानक से 8 साल बाद बैन हटता है and you get to know Yeah, कि एक camp पे और competition तब tough था in playing against India and Bangladesh. They are good teams. तो तब कंपटीशन बहुत टफ था एंड वी काइंड ऑफ वी लिटरली वी प्लेड फ्रॉम आवर हार्ट्स. ये वाला हिसाब था कि हमें बस कुछ भी होना है, हमें अपनी जान लगानी है. Because अगर देखें वहां पे तो और उस टाइम द बेस्ट पार्ट वाज कि हमें एटलीस्ट 1 महीने का कैंप मिला था टू गेट आवर बेसिक्स राइट. जबकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान कैंप में आप अपने बेसिक्स और आप फुटबॉल सीखने नहीं आते हो, आपने जो chemistry के लिए आता सीखा है, है बिल्कुल. वो आप दिखाने आते हो. ऐसे ही. तो अब हमारे यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि ऑफ कोर्स हमें गेम्स मिली, चैंपियनशिप और ये सब कुछ नहीं हुआ. तो उसमें हम 1 महीना तो हमने सीखा कि फुटबॉल खेलना कैसे. आई मीन दैट्स सैड बट ऐसा ही था. हमने सीखा कि फुटबॉल कैसे खेलना है. हमारी फिटनेस सही की जा रही थी उस पूरे महीने, तो वी वर एग्जॉस्टेड एंड देन उसके बाद ये गेम होना. बट आई वुड से द बेस्ट पार्ट वाज दैट वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट गेम. एज आई थिंक बिकॉज यंग प्लेयर्स भी बहुत थे, हमें सीनियर से बहुत सीखने को मिला. हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला जहाँ पे वी गॉट टू नो कि डाइट जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे फुटबॉल पे. डाइट हो, फिटनेस हो, सराउंडिंग्स, एवरीथिंग वी लर्न उस कैंप में. सो इट वाज अ गुड कैंप. Okay, and coming to the recent matches you played, what do you think was the difference between your performance personally and your team ki performance overall? Where do you think you guys improved? Obviously, I think in the first half you gave a tough time to the Saudi, and अगर हम देखें Saudi की जो team है, जिस तरह की facilities they have, the league they have, it's totally different from what we have in Pakistan. So how did you guys manage to keep up on your toes and like give them a tough time? Of course, the advantage we had because हमारे पास senior players थे, experienced players थे, Maria, Suha, all of them. Plus also we had diaspora players. तो हमारे पास advantage था. And that team, Saudi की team, they had young players.
उनके पास सबसे बिगेस्ट एडवांटेज मैं कहूंगी वो है इनका लीग सिस्टम। Yeah, उनकी जो ये लीग है उनके पास आई थिंक हर क्लब में बाहर के प्लेयर्स भी हैं, बार्सिलोना के बिल्कुल प्लेयर्स हैं, बिल्कुल। आई हर्ड, एंड ना द फिजिक दे हैड। और अब वो क्या उस टेबल पे ला रहे, वो कैसी परफॉर्मेंस लाते होंगे बाहर के प्लेयर्स, और वो उनसे क्या सीखते होंगे। आई थिंक दे वर कॉन्फिडेंट। जिस तरह की गेम सऊदी ने खेली, आई वोंट से वो हमसे अच्छे थे, आई वुड से इन्होंने मैचेस बहुत खेले थे अगेन। इन्होंने इनकी जो लीग है, जिस तरह के प्लेयर्स के साथ ये खेल रहे हैं, आई थिंक इनको बहुत बड़ा एडवांटेज इसी चीज का है, बिकॉज इनका लीग सिस्टम, हालांकि आफ्टर बैन पाकिस्तान और सऊदी एक ही लेवल पे था, वी स्टार्टेड द सेम, इट्स जस्ट दैट दे बिल्कुल। हैड मनी एंड देन दे स्टार्टेड दिस लीग। और ये गेम्स वगैरह हुई, दे इनका जो कोचिंग स्टाफ है, आई थिंक this time they have coach from Barcelona, if I'm not wrong. Yeah, उनका कोच अच्छा है काफी। या व्हाट Yeah, डू यू so the थिंक, वर whole दे staff. फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन यू? और फिर अगर हम उस पर बात करें थोड़ी डिटेल में, फिजिकलिटी के साथ साथ टैक्टिक्स कैसी थी इंडिविजुअल प्लेयर्स की? वर दे मोर स्किलफुल देन यू गाइज? और फिर हाउ वाज द टीम केमिस्ट्री कंपैरेटिवली टू द पाकिस्तान टीम? बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज के वेयर कैन वी improve for as a team, as a nation, as fans? I think the tactic, I would say, जो मुझे लगा, जब of course I saw the match, the whole first half, मुझे लगा कि इन्होंने जो midfield area, because the coach, I would say, he knew कि हमारा जो strong area है वो midfield का area, जहाँ से of course हम्म, हर टीम का इस गेम जो बॉल है वहीं से ही निकलना। रोटेट होती है। बिल्कुल। तो वहां पे दे काइंड ऑफ ब्लॉक दैट एरिया कि यहाँ से इन्होंने बॉल जाने ही नहीं दी, तो दे गेव अस द विथ कि यू कैन यूज द विथ, बट दे डिडंट गिव अस द सेंटर, जहां से मोस्टली गोल, जो सबसे डेंजरस एरिया इन्होंने वही ब्लॉक किया हुआ था। तो आई थिंक हम्म। इस टैक्टिक में आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट किया, तो कोच को इसके लिए आई वुड से गिव हिम द क्रेडिट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वोंट से कि प्लेयर्स इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग थे, दे वर स्ट्रांग कलेक्टिवली। ऑफ कोर्स कोई भी टीम जो इनकी अच्छी सी इनकी केमिस्ट्री थी, द वन टू दे वर डूइंग, बट आई फील लाइक वी कुड हैव लाइक वन अगेंस्ट देम इजीली, जस्ट बिकॉज द हम जो मिडफील्ड से हम जो ये बॉल नहीं निकाल पाए, आई वुड से दैट कुड बी द प्रॉब्लम। द वे दे कॉम्पैक्ट, उन्होंने वो एरिया बहुत कॉम्पैक्ट किया हुआ था। आई वोंट से कि हमारे मिडफील्ड ने अच्छा या काम नहीं किया, हम्म। Soha, she has done a great job. I won't say that, but I think maybe bad luck, or I don't say, even I'm tired of saying What bad luck. things would you, what things would you improve in yourself and the team for next match against Saudi or any professional team on that level? Okay, so individually, I would say I have to be disciplined. I'm not saying that I don't work hard, but I have to make sure कि मैं बहुत ज़्यादा hard work करूँ. Because I feel like the disciplined players, like two top most disciplined players on my team में, that is Soha and Maria. And उनका discipline match करना, it's very tough. And I would say कि कहने को तो it's easy कि आप discipline हो जाओ, you do this, you do that, but it's discipline is hard. You have to Yeah, sacrifice your sleep, your diet, and everything. So I would say जहाँ पे मैं improve करना चाहूंगी, there would be discipline, which is very hard. I'm not saying that मैंने मेहनत नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है. But I feel like मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, because the competition we have right now, diaspora players से हमारा competition है, हमारा local players से competition नहीं है पाकिस्तान में. तो ये मैं आई वुड से, एंड कलेक्टिवली आई वुड से सेम, आई थिंक वी हैव टू बी डिसिप्लिन। हमें हमारा हार्ड वर्क सबसे ज्यादा होना चाहिए। आई नो वी डोंट गेट द अपॉर्चुनिटीज, लाइक बहुत ज्यादा वी डोंट गेट द गेम्स, और हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, बट आई थिंक इफ इंडिविजुअली वी वर्क हार्ड तो वी कैन मेक अ डिफरेंस। talking about discipline, would you mind sharing your routine? What's your daily routine like? Maybe during the season, जब आपको पता है कि like camp लगा हुआ है, what's your routine during that time? Okay, that time I would say my routine is I wake up early because we have morning sessions, 6 something. We do individual sessions too. तो morning I would say फजर पे उठ के I'll go, because यहाँ से जल्दी जाना होता है हमें, क्योंकि हम ट्रेनिंग करते हैं लेजेंड्स अरीना में या तो डिफेंस साइड में, Hmm. एंड आई लिव इन गुलशन। सो यहाँ से वहाँ का जो ट्रेवल डिस्टेंस ही हमारा बहुत होता है, इट्स लाइक 1 hour। तो Yeah. हमारे तो ये ट्रैवलिंग में ही मेरे मोस्टली टाइम मेरा ट्रैवलिंग में ही जाता है, 2-2 घंटा फॉर 2 सेशंस। तो इफ मैच होता है तो वी डू 2 सेशंस वन डे, एंड देन द नेक्स्ट डे वी डू 1 सेशन, उसके अगले दिन 2 सेशन, इस तरीके से। और उसमें आई कैन इंक्लूड माई जिम, बट आई वुड से कि जस्ट बिकॉज मैच से पहले ऐसा रूटीन होता है, जबकि ऐसा रूटीन आई थिंक हर दिन का होना चाहिए, एटलीस्ट अ सेशन पर डे एंड 1 day ऑफ इन अ The वीक, इफ problem ऐसा। here is, sorry to cut you down. The problem यहाँ पे ये आती है पाकिस्तान में कि ऐसी रूटीन तब होगी जब हमारे पास एक नॉर्मल लीग चल रही होगी, जो आपके पास 4 से 5 महीने की लीग चल रही होगी, तब प्लेयर्स की ये रूटीन चल रही होगी. That's the main problem
when I interviewed all of the other players, even from the men's national team, Abdullah Shah, all of those guys, all of them had the same problem कि as a person, as a human, आप उन चीजों को बैलेंस कर ही नहीं सकते until and unless आपको एक push मिल रहा हो in a form of a league. So I totally get you उस लिहाज से. But what do you think is the best solution regarding a league? Do you think a club league होनी चाहिए for men and women, or should it go in the format जो हमने सुना था, franchise model? I would say club level वाली ही हो, because उसमें आप बहुत सीखते हो. And I Hmm. won't say ये हो, मैं कहूँगी कुछ भी हो कि हमें खेलने को मिले, हमें सिर्फ मैचेस चाहिए. बिकॉज अब वो बहुत एक डीप कॉन्वर्सेशन जाती है कि जैसे कि लीग होनी भी चाहिए, कैसे होगी, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, ब्ला ब्ला. आई वुड से वजह जो पहले होता था, जैसे आपने एक साल में एक चैंपियनशिप रख ली, फिर आपने कोई नेशनल गेम्स रख दिए, आप वही चीजें ऑर्गेनाइज करवा दो. इट्स अलॉट फॉर अस, बट एटलीस्ट विल गेट टू प्ले समथिंग. एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट, टू फॉलो अ रूटीन, टू बी फिजिकली फिट, आपको एक डाइट कंज्यूम करनी होती है. उस डाइट, द डाइट कॉस्ट अस अलॉट. बिकॉज इन मेरे उस पे ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव टू मुझे कोई एक्सपेंस देखना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने एक्सपेंसेस देखने. बट बहुत सारी फैमिलीज में, जैसे अगर लड़कों की बात की जाए, तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, दे आर द प्रोवाइडर, उनको देखनी होती है चीजें. तो इफ दे आर नॉट गेटिंग द पे, एक इवन इन चैंपियनशिप से भी, सो दे वोंट प्ले दिस गेम दिल से. कहने को तो ऑफ But कोर्स we प्ले. still have a lot of players जिन्होंने without these things खेला, even the diasporas Yeah. जो बाहर से आके खेल के गए हैं, locals भी, Yes. they played for the country and all of that. And that's totally respectable, and I think what they have done for the country is huge. मतलब कोई True. भी इतनी ज्यादा time जो है वो नहीं देता अपना, but they did. Coming to the last question, is कि what do you think is your future playing in Pakistan football? Where do you see yourself? Do you see yourself retiring anytime soon, or like what's your plan? I don't know. I can't say anything about that because फिलहाल तो like कोई future लग नहीं रहा फुटबॉल में. I mean sadly because the way I planned कि ऐसा होगा, ऐसा चल नहीं रहा, क्योंकि I don't know the reason, maybe politics or whatever. But as of now, I don't see any future. But I wish, I think there is this hope inside कि कुछ भी हो सकता है. Maybe things will change. So let's see what happens. Do you think you should be exploring something abroad? Like अगर आप बाहर कहीं जाओ, you have the talent up, you have the matches under your belt. अगर आप उस चीज को explore करो, do you think that's a possibility for you or anyone else जो पाकिस्तान में struggle कर रहा है? Do you think they should use that opportunity? I think they could, but the जो एक बाहर का जो लेवल है as compared to Pakistan, it's very different. It's very tough. Agreed. आप easily नहीं, if आप जाओगे भी तो आप बहुत एक ऐसे एक लोकल और एक उस टीम के साथ खेल सकते हो जहाँ पे you won't improve. तो I don't think so, but maybe सबका अपना perception है इस चीज को लेके, but मेरे हिसाब से I don't think so. Well, you have Perfect, the perfect. opportunity, so you can. Okay, thank you so much for giving your time and speaking about your experience and आपने जो football जैसे खेली and all of that. It was really wonderful having you for this episode. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz.